Okay, recording has been started now. No, this is where we ended our last session. Okay. In last session, we discussed about potential field and its relation with the electric field, and we derived, not really derived, we calculated the electric field at a particular point. मतलब क्या? अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है, जो कहते हैं ना 11 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, 12 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, ऐसे होते हैं. ओके, अगर these two are neutral lines, okay, and this is your live wire which is actually carrying the current and voltages, so I can say that this is nothing but a line charge. Okay, this line charge will have its electric field around it. Okay, और यहाँ पे अगर समझ लीजिए रुत खड़ा रहता है तो will he get shock or not? That we want to identify. Why? Because we want these transmission lines to be spaced above the ground surface at certain height, so that a person moving from the downside of your line will not get shocked. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो चीज कहता है कि भाई यहाँ पे जहाँ पे रुत खड़ा है ना वहां पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड है. Okay. For human to get a shock, we need not to consider the magnitude. Sorry, we need not to consider the direction, but we will be more interested in magnitude. कि भाई कितने quantity का shock लगने वाला है, and whether it's sustainable or not. So every time when you are standing below the transmission line, you are actually standing in the electric field produced by that particular line charge. Okay, that is very important. ये हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात. ओके, यही सेम आप कंप्यूटर गेमिंग में भी यूज कर सकते हो, सेम इक्वेशंस. कि यहाँ पे अगर करंट आता है, सम सॉर्ट ऑफ जुरासिक पार्क खेल रहे हो कि वही बंदा करंट ऑन कर रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू क्रॉस द फेंसिंग, तो वो डायनामिक चीजें होते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द यूजर. वहाँ पे स्टैटिक प्रोग्रामिंग काम नहीं करती. सो एज सुन एज वो कोई तो भी पावर सप्लाई ऑन कर रहा है एंड सम पीस ऑफ प्रोग्राम गेट्स ट्रिगर्ड और ये कैलकुलेशंस परफॉर्म होते हैं, and if you are standing near to the fencing you will get shock. If you are not standing near the fencing you won't get a shock. This is a dynamic programming. Okay, अगली बात VLSI की. VLSI में भी बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं. The distance between two tracks is really in the range of 1 to 2 nanometer. 1 to 2 nanometer मतलब क्या? 10 to 20 atoms roughly. Okay, roughly. So we need to have those kind of calculations in the microscopic era, nanoscopic era. Okay. So I gave you an simple application areas. The procedure remains same. क्योंकि VLSI में जब भी बात आती है तो you apply 3.2 volt or 5 volt or 4.2 volt. Nowadays 1.8 volt also works. So you have some sort of voltage and you want to find the electric field, whether my devices will get damaged or not. So accordingly, you need to have your routing. So you do have n number of applications wherever you find the what we need, only the variable and the point. Okay, there we can find the electric field intensity. Okay, now moving on to next point, let us write down with me another group D numerical. If potential V is expressed as some expressions in the free space, calculate first E bar at P234. तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया. फर्स्ट कि यहाँ पे क्या यूज करेंगे? माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V. ये dV बाय dN मतलब क्या है और AN कैप मतलब क्या है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू द वेक्टर along E bar. Okay, और AN कैप फिर से आ गया आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर. This is the understanding. Okay. So after reading the numerical, let us put down everything in our regular format.
v का एक्सप्रेशन दिया है, e बार फाइंड करना है, dv by dn फाइंड करना है, an कैप फाइंड करना है. What formula we do have? E bar is equal to minus del v. Del v है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सीधा सीधा दिख रहा है because v has x, y, z variables. Then dv by dn means magnitude of electric field intensity at p. आपका जो वोल्टेज है चेंज होके कितना बना है, कितना डेविएशन हुआ है. ओके, an cap means the direction of e bar at p. ओके, तो जब भी ये बात आती है मैग्नीट्यूड ऑफ ई बार, ओके, or e bar at certain point, okay, always do remember that we will have an expression of e bar in a ax cap plus ay cap plus az cap, okay, some variable, some coefficients associated with the unit vectors. So magnitude find करते वक्त उस coefficients के अंडर रूट में स्क्वायर्स लेना है. Let us solve numerical. Part 1. It is a straightforward procedure. Okay, e bar is equal to minus del v. तो जो इंडिविजुअल टर्म्स लगने वाली है, डैबा बाय डैबा एक्स, डैबा बाय डैबा वाई और डैबा, सॉरी, डैबा वी बाय डैबा जेड, तो ये इनको कैलकुलेट कर लीजिए. ओके, जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था, दैट वाज द लास्ट टाइम आई वाज डूइंग द पार्शियल डिफरेंशिएशन. स्टिल आई वांट टू डू इट वंस अगेन दिस टाइम. डैबा बाय डैबा एक्स, so v expression is 10x square z plus 5y square is equal to dabba by dabba x of 10x square z plus dabba by dabba x of 5y square. Okay, so partial differentiation, so rest of the variables will remain constant, so those are taken out from the partial differentiation. Now dabba by dabba x of 2, sorry, dabba by dabba x of x square, it becomes 2x, and here we don't have any x variable, so this is treated as a constant. So the derivative of a constant is always 0, and this is nothing but 20x. This is what is written over here. And similarly we can do dabba v by dabba y and dabba v by dabba z. So knowing the terms, we will put the terms into the formula and we will have e bar is equal to माइनस कहाँ से आया, ये माइनस है. ओके, so 20x z ax cap plus 10y ay cap plus 10x square az cap. Now when we say that we want to evaluate e bar at certain point, तो point की जो values है x y z की, वो expression में लिख दीजिए, you will get e bar at that particular point. This was part 1. Then part 2 क्या कहा था part 2 में कि dabba v by dabba n means magnitude of e bar at point, magnitude of e bar at point p. This is a e bar at point p, तो इसका magnitude लेना है. So 160 square plus 30 square plus 40 square, you will have this one. Okay, then part 3. अभी अभी कैसे है कि अगर ये पता नहीं है ना, तो you cannot solve in the examination. पता है तो ही solve कर पाओगे. Therefore it is called as group D numerical. Group some क्या कहते हैं उसको भाई, हट के कुछ पूछा जाता है which is not actually covered in the text. Okay, तो उसके लिए वो ग्रुप डी हो जाता है. So dv by dn is nothing but magnitude of the quantity we evaluated at certain point. Okay. Now part 3 is an cap. So as usual, normal unit vector is represented, okay, e cap is equal to vector upon magnitude of vector. जैसे आप करते थे, ar cap is equal to vector upon its magnitude. Okay. So vector लिख दिया, उसके नीचे magnitude लिखता है. ये यहाँ से vector आया उस, और उसके नीचे आपका magnitude आ गया. So part 3 done. A kind of straightforward numerical, but looking at the quantities asked, ये पल्ले ही नहीं पड़ता है कि ये कहना क्या चाहते हैं, what they want exactly. Okay, अगर उन्होंने सेकंड में, इस सेकंड पॉइंट में कहा होता कि भाई फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई बार एट पॉइंट पी, वो तो फिर किसी ने भी सॉल्व किया होता, कोई दिक्कत नहीं. बट व्हेनेवर as soon as they say that dv by dn at point p, things get difficult. But the procedure in the numerical remains very easy, straightforward. Okay, तो यूजुअली दिस न्यूमेरिकल एक 6 से 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता था. ओके, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता था कि भाई ये 3 मार्क्स के लिए रहता था. ओके,
ये 2 मार्क्स के लिए, और ये 1 या फिर 2 मार्क्स के लिए, जैसे भी, डिपेंडिंग अपॉन 6 के लिए कि 7 के लिए है। अभी आपका क्या होगा, अगर एमसीक्यू अगर आता है तो 3 मार्क्स का भी एक एमसीक्यू आ सकता है। 1 mark, 2 mark, 3 mark, it can happen. So they will ask only part 1, or they will ask only part 2, they will ask only part 3, depending on changing the values and changing some sort of scenario. तो आपको टेक केयर करना है. For that purpose you need to have your formulae along with you. Okay, so we do have A and cap. Moving on to next numerical. यहाँ तक सबने लिख लिया? Did everyone note it down up to this point? मुकेश, लीला का? हो झालं. Okay, thank you. Someone please keep on giving me feedback. Otherwise, ऐसे लगता है कि भाई मैं अकेला ही बैठा हूँ. Okay, this is a numerical. Next numerical. Once again, we are given with an expression of v. Fantastic expression है, 100 upon z square plus 1 r cos phi. Extremely sorry. And we have point P. Okay, looking at the point P, it is having only one angle, so it indicates it is a simply cylindrical coordinate. Calculate at point P. We need to have some calculations for finding the voltage, E bar, dV by dN. ये अगला एक और ऐड कर दिया रो भी. देखो अभी वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया है, पॉइंट दिया है, सो वी कैन फाइंड द वोल्टेज एट पॉइंट पी. क्या करेंगे भाई, R इज इक्वल टू 3 पुट करो, फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री पुट करो, और Z इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर दो. वी विल गेट V एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट P. ई बार कैसे फाइंड करेंगे, माइनस डेल V. dV by dN is nothing but magnitude of E bar at P. AN cap is E cap is equal to E bar upon magnitude of E bar. रो वी अगर आपको याद होगा तो गॉस लॉ, इट इज डेल डॉट डी बार. अभी यहाँ पे तो डी बार नहीं है. ओके, तो डी बार कैसे लाएंगे, वी आर नो अनदर एक्सप्रेशन, डी बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई बार. तो आपके पास तो ई बार वैसे भी है ना, सो ई बार से डी बार मिला, डी बार से ये मिला रो वी. ओके, so numerical becomes straightforward, but looking at the expression of v, we get a kind of goosebumps कि यार फिर से partial differentiation. देखो partial differentiation कोई बड़ी बात नहीं है, long as you keep on doing those and keep on doing mistakes, one day will happen कि भाई it will it will fear you. Okay, अभी ये जोक उन्हीं को समझा होगा जिन्होंने it देखी है. How many of you have seen the it movie? जी सर. Okay, पता था रुत तो पक्का देखने वाला है. हाँ? पाहिलं. कोण म्हटलं आता? Who was it? There was a girl sound. धनश्री सर. धनश्री. ओके ओके. Yes sir. वाह वाह. तो अगर आप इट से नहीं डरोगे तो वो आपसे डरेगा. Am I right? राइट सर. तो जितना आप प्रैक्टिस Yes. करोगे उतना ही आप कंफर्टेबल होते जाओगे. ओके, तो this is a homework numerical for you. I will give you the answers, final answers. I haven't calculated the last one rho v, but I wrote the formula over here. You can do calculation for the rho v. ये final answers लिख लीजिए आप and do the homework and check whether the answers shown on the slide are correct or not. If there is a mistake, let me know. Okay, answers लिख लीजिए. I will wait for 1 minute.
लिख लिया आंसर्स? अभी आधा मिनट होना बाकी है। एंड आई विल सजेस्ट डोंट टेक द स्क्रीनशॉट, लिखो हाथ से। तो तुरंत लिखने के लिए बोला कि तुरंत वो की प्रेस करते हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो। ठीक है, probably you have written the answers in your notebook, and now I will stop sharing and we'll go for next part, that is energy density. Okay. At some moment of time we discussed about potential energy. आपको ये चीज याद है क्या, की थी कि नहीं की थी? शायद नहीं की थी, नहीं की थी। पोटेंशियल एनर्जी वी हैवंट डिस्कस्ड। ओके, तो क्या करना है कि भाई यहाँ पे एक अजम्पशन है हमेशा। now we are looking at some different topic, not really independent topic but a little bit different topic. okay, potential energy. potential energy आप शायद 8th standard से पढ़ रहे हो। okay, potential energy and kinetic energy, and potential energy is nothing but gained energy due to some work done. ओके, वर्क डन करने की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है, और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन करो तो ही पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। The simplest example we saw in standard 8 and 9 was throwing a ball in the air. Everyone started the discussion about the potential energy from that example. So here what we are considering, we are having some sort of charges. okay. आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि भाई lots of charges gathered together creating a I will say arbitrary shape. Those are not going literally away from them, but they are trying to nearby, not trying to stay nearby to each other. Just like coronavirus, the bunch of viruses stays together, and if someone passes nearby from it, they gets attracted to that body. Okay. So we do have a volume charge, and due to that volume charges which are enclosed inside the volume in arbitrary shape, they will have their field around it. तो यहाँ पे जो सर्कल दिखा है with radius r, that is a field what we assumed. और इसी को मैं अगर फैंसी थिंग में तो मैं कैसे कहूँगा कि भाई consider a certain arbitrary shaped volume charges having Gaussian surface at radius r. एक Gaussian surface का मीनिंग क्या आ गया कि we are considering a surface of our own interest and we are going to do some sort of mathematics on that surface. तो ये सारी चीजें अलग अलग बताने से अच्छा है कि Gaussian surface है, तो we will treat that surface in some mathematical way. So let us go step by step. Consider any arbitrary shape structure containing volume charge distribution rho v. For the simplicity of calculation, we will enclose these surfaces into a sphere of radius. Then according to Gauss law, same amount of charges developed on the surface of the sphere. आपको वो याद होगा, गॉस लॉ जब पढ़े थे, सो अगर अंदर वाले स्फीयर पे प्लस 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 है और बाहर वाला स्फीयर रखा है जिसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो नहीं है, आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, बट स्टिल equal and opposite charges are get developed. Someone said something parallel. Okay, great. We will move to next. So potential energy is defined by potential energy WE is equal to 1/2 QV. Okay, and Q is defined as this is a Q. Okay, this Q is total amount of charge enclosed inside this surface. Okay. सो डेंसिटी दिया है, अगर डेंसिटी को इंटीग्रेट करते हो आप डीवी पे, वॉल्यूम पे, तो यू विल गेट अ कंप्लीट अमाउंट ऑफ चार्ज। ये क्यों लिखा है देखो यहाँ पे समझ लो, रो वी इज अ डेंसिटी। डेंसिटी को कैसे करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ एरिया। ये छोड़ दो, चार्जेस छोड़ो, अगर मैं ह्यूमन डेंसिटी की बात करता हूँ, ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हो,
कि भाई महाराष्ट्र स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया ऑफ स्टेट। ओके, तो ये क्या है, ये चार्ज डेंसिटी है, सो टोटल चार्ज अपॉन एरिया। सिमिलरली जैसे रो एल था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ था, एरिया नहीं सॉरी वॉल्यूम सॉरी, एंड रो एस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन सरफेस। सो क्वांटिटीज, लाइन चार्ज है इसलिए लेंथ, सरफेस चार्ज है इसलिए सरफेस, वॉल्यूम चार्ज है इसलिए वॉल्यूम। ओके, सो this relation comes from here. So q is integrated rho v dv, so we can put the value of q into the above equation, so we will have w is equal to 1/2 इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो वी dv। ये v कौन सा है, ये v ये वाला v है। ओके, अप्लाइड पोटेंशियल। Now rho v is equal to del dot d bar, so we can modify the above equation, so we have w is equal to 1/2, तो rho v की जगह पे we have noted down del dot d bar। Okay, great, and we have very beautiful vector identity which is very hard to digest, but since you have studied M3 and probably you have utilized this vector identity while studying and solving the numerical at home, so giving that confirmation to myself कि okay, you know this randomly looking very weirdly looking vector identity जो सही में पल्ले नहीं पड़ती कि ये ऐसा क्यों है। Okay, we really don't know that, but we want to use it, so scalar v into bracket del dot d bar is a vector, this can be elaborated as del dot v d bar minus d bar dot del v। Okay, so gradient as well as your divergence। तो ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है इसको रीराइट करेंगे इनसाइड द इंटीग्रल, सो वी हैव बाय आफ्टर स्प्लिटिंग द टर्म्स, एक में ये आ गया और दूसरे में ये आ गया, वंस अगेन वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर द वॉल्यूम। ये टर्म है ये टर्म, ओके, और ये दूसरी टर्म है ये वाली टर्म, and the minus is as it is। Okay, so we started from here, we manipulated few of the things mathematically and we have ended into equation number 2 that really looks weird compared to the first equation 1/2 qv। Okay, so according to Gauss law, if we do have some sort of charges enclosed inside a closed surface, देखो क्या लिखा है, closed surface लिखा है, so d bar dot ds bar is equal to del dot d bar dv। Okay, Gauss law है, so we can say that okay, if we have instead of d bar we do have vd bar, okay, dot ds bar, this can be written as del dot vd bar क्योंकि d bar is now vd bar, therefore d bar is vd bar, just mathematical twists। Okay, so equation number 2 we want to now put this one। Okay, let us see, so therefore w is equal to half closed surface integration of vd bar ds bar, तो एक बना surface integration, दूसरा बना volume integration। Okay, so let us go, so we know that यहाँ पे v is inversely proportional to r, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे from the charges your potential will go on reducing, your d bar or respect to r square। अगर आपको याद होगा equation of what I will say that electric field due to a point charge is equal to q upon 4 pi epsilon 0 r square a r cap, तो हमेशा r square e bar is nothing but मैं लिख सकता हूँ d bar भी, अगर मैं यहाँ पे epsilon 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कांस्टेंट है। So d bar varies with respect to 1 upon r square, ds bar varies with respect to r square, क्योंकि जैसे आप वैसे r बढ़ेगा इसलिए डिफरेंशियल सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थ्री रिलेशंस वी कैन से दैट तो ये vd था 1 upon r, ये d bar था 1 upon r square,
और ये ds बार था 1 अपॉन सॉरी ये था r स्क्वायर, तो r स्क्वायर and this complete term okay will tend to 0 for large area मतलब r tends to infinity, तो 1 upon r is 1 upon infinity and that is will be equal to 0. If we are considering this relation, देखो assumption बहुत important है, if we are saying that r tends to infinity, then and then only the vd bar dot ds bar, this relation is going to be 0. Very important assumption. Okay, if you lose this assumption then you will say कि यार ये जो term थी ये cancel क्यों हो गई, ये zero क्यों हो गई. That do have this understanding. Okay, ये understanding बहुत जरूरी है. So therefore we do have w is equal to minus half d bar dot del v dv. Okay, so now d bar is equal to epsilon e bar and del v is equal to minus e bar. The standard relations in between the electric flux density and electric field intensity, and this is the gradient voltage with respect to the relation with the electric field intensity. So we want to have the complete expression into a single variable. We don't want d bar variable, v variable. We don't want to play with multiple variables. We want to put everything into the simple one variable equation. So we is equal to now d bar is epsilon e bar and del v is minus e bar. So we can do the e bar dot e bar. Okay, very important. Do you remember that r bar is equal to magnitude of r bar square. क्यों है, मैथमेटिक्स ट्राई करो, मैथमेटिक्स से आ जाता है. So we will have 1/2 epsilon, ये माइनस और ये माइनस मर्ज हो गए, so we will have plus 1/2 epsilon इंटीग्रेशन e square dv. बहुत 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 important relation है as long as your theory as well as MCQ examination is concerned, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं. And with that said, we will stop this session and from next session we will क्या कहते हैं उसको, we will solve the numerical on this formula. Okay, तो सबने नोट डाउन कर लिया है. I will wait for one moment, 1 minute. दीपेश नोट डाउन कर लिया आपने? Yes, sir. Okay, great. मैं बार बार कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट नहीं निकालना है, आपने नोट डाउन करना है. Okay, great everyone, thank you, bye bye, take care.